and welcome back. So class, after attending or you can say after watching the video of our conversation class, I hope you have understood what is coming and how we celebrate it. You like that parade? This is how we showcase our power, our strength, our unity, our culture to everyone. Isn't it great? Now, it's time to begin with our today's EVS class. Yes. So class, can anyone tell me what are we doing in EVS these days? क्या कर रहे हैं मैम? आपको क्या पढ़ा रही हैं? About whom we are learning? We are learning about different social or community helpers. Yes, very good. Until now, we have learned how a doctor, a nurse help us. How they help in keeping our health, keeping our body fit without any without any disease. किसी भी बीमारी से बचने में वो हमें किस तरह से हेल्प कर रहे हैं. And you all must have seen last year that when the pandemic was going on, जब कोरोना everywhere was coronavirus, तो क्या था? These doctors and nurses, they were fighting for all of us, isn't it? वो हम सब का कितना ध्यान रख रहे थे. How doctors was giving different tips to protect us, to save us from this corona, isn't it? So they all are worried about our health. They all are the people, doctor and nurses are the people who take care and are wishing for our good health. जो हमारी good health के लिए wish करते हैं and they take care of our good health. Then after doctor and nurse, we have learned how a policeman help us. How he is always available to protect us from thieves, from the bad people, and how they are maintaining law and order in the school. See class, मैम ने अभी आपको previous जो हमारे conversation class थी उसमें बताया था what is constitution? The supreme law, जो कानून बनाए गए हैं, which is the supreme, जो सबसे ऊपर है, we have to follow it. अब उस constitution को effectively लोगों तक that effectively follow करें लोग, how we have to follow it and कोई rule break ना करें. Who is taking care of all this? These policemen. ये जितने भी policemen हैं, they all are taking care of this कि जो हमारा constitution है उसमें जो भी laws हैं, we all are following them. Isn't it? Now today I am going to tell you, or we can say we are going to discuss about a different social helper who is actually helping us not regularly, जो हमें रोज तो help नहीं करते, but yes, some time of the year we have to go to them for their help. The one who uses a pair of scissors, see we have a scissor. The one who uses a comb. So can anyone tell me, okay, scissor have lot many use. We use it for cutting paper, we use it for cutting different things. But can you tell me what is the use of this comb? Yes, every morning when you get ready, you brush your hair. Very good. So you all comb your hair, or we can say brush your hair. Why do we do that? Why do we do this brushing or combing of hair? क्यों करते हैं हम ये? So that we all look smart. जब आप सो के उठते हो, all the hair they are so shabby, सब बिखरे हुए होते हैं. Isn't it like that? But after taking a shower, when you feel so fresh, getting ready, prepared, एकदम अच्छे से smart दिख रहे हैं, but your hair, they are all scattered, shattered and all बड़े-बड़े हो रहे हैं and मतलब इतने big हो गए हैं कि आप खुद उन्हें manage नहीं कर पा रहे हो. आप छोटू से हो, आपके hair बड़े-बड़े हैं. So, to whom you are going for the help? अब पापा हैं, for example take boys हो गए, men हो गए, they all prefer keeping trim hair. जो छोटे-छोटे होते हैं आपने देखा है ना, we call it a boy cut. अब अगर पापा के hair बड़े हो गए हैं, मम्मा जितने हो गए हैं, तो पापा को तो किसी की help लेनी पड़ेगी ना, to get them trim
या टू गेट देम कट, तो किसकी हेल्प लेते हैं पापा? यस, वी गो टू अ बार्बर शॉप और वी गो टू अ हेयर ड्रेसर. हम क्या करते हैं, जो वहां पे अंकल होते हैं उनको हम बार्बर भी कहते हैं, बिकॉज ही इज हेल्पिंग इन गेटिंग पापा ग्रूम प्रॉपरली. एंड फॉर लेडीज, जब मम्मा का मन होता है कुछ अच्छा सा स्टाइलिश हेयर कट का, या इफ मम्मा वांट्स यू टू हैव अ स्टाइलिश हेयर कट, या अगर आपके हेयर मम्मा को छोटे कराने हैं, सो वेयर वी आर गोइंग टू गो? वी विल गो टू अ हेयर ड्रेसर. हेयर ड्रेसर कौन होते हैं? जो हमारे बालों को अच्छे से ड्रेसअप करते हैं, उन्हें प्रॉपरली शेप करते हैं, ट्रिम करते हैं. सो वी गो टू अ हेयर ड्रेसर. यस, हेयर ड्रेसर इज द वन वी आर गोइंग टू सी what are the different tools they use and where we can meet them. See, every helper has a special place. As I told you, doctor, nurse, we can meet them in a hospital or a clinic. If we are talking about a policeman, policemen कहाँ होते हैं? Police station में होते हैं, isn't it? Now, we have also discussed about mechanic, plumber. So they all have their own places to sit. प्लम्बर का अपना एक ऑफिस होता है, जैसे सी पापा भी ऑफिस जाते हैं ना, सो प्लम्बर इज ऑल्सो हैविंग वन प्लेस लाइक दिस. इफ यू वांट टू विजिट अ हेयर ड्रेसर और अ बार्बर, यू हैव टू गो टू अ सैलून. कहाँ जाना पड़ेगा हमें? सैलून. सो व्हेन वी आर गोइंग देयर, वहां पे वो उनकी जगह होती है. दे हैव ऑल द इक्विपमेंट्स देयर. उनके पास वो सारे इक्विपमेंट्स होते हैं विच दे नीड to get our hair dressed. What are those equipments? As I have shown you, they need a comb, then they need a pair of scissors, क्योंकि अगर वो लेंदी है तो उन्हें कट भी करना पड़ेगा. Then what else they need? Comb, scissor we have already seen. They need a color brush. Many of us we get our hair colored. Hair में हम कलर भी अप्लाई करते हैं, different कलर्स का जब मन होता है, isn't it? So hair color brush होता है उनके पास. Then they have a shampoo to wash your hair. Then they have a hair blower, hair dryer, जिससे क्या करते हैं, after cleaning, after washing, they blow dry, वो उनको dry up करते हैं. Not only this, sometimes they use oil. अगर आपके hair बहुत damage हैं, then what they do? They use different type of oils in your hair to get them smooth. So there are a lot of things a hairdresser or a barber has. अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? If any time you get a chance to visit with your father or with your mother, visit there. Touch नहीं करना कुछ भी. No, don't touch anything. But just try to see what all things a hairdresser and a barber has. Okay. So how a hairdresser is helpful to us? Can anyone tell me? Yes, a hairdresser help in keeping our hair healthy. देखो बेटा, हेयर को हेल्दी रखना भी बहुत जरूरी होता है. अब क्या होता है, many time it happens कि हमारे जो हेयर होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमें उन्हें कट कराना पड़ता है, या फिर अगर हम बार बार कट ही कराए जा रहे हैं और फिर भी वो डैमेज आ रहे हैं, तो वी हैव अ ट्रीटमेंट. सम ऑफ अस हैज लाइक स्मूथ हेयर, किसी के नहीं होते हैं, तो स्मूथ कराने के लिए भी टेक ट्रीटमेंट. जैसे हम डॉक्टर से अपने लिए अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए ट्रीटमेंट लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, सिमिलरली वी हैव ट्रीटमेंट फॉर आवर हेयर. और वो ट्रीटमेंट कौन करता है? हेयर ड्रेसर होते हैं या जो बार्बर होते हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं. सो दे हैव ऑल दीज थिंग्स in their shop, which is called saloon. Okay, so now what we can do is we have a small worksheet to do in our book, for which please open your book, EVS book, on page number 85. So open your EVS book on page number 85. Yes, this is the page number you have to open. Open your book, see what all things are there, and please mention today's date, and then we'll see what work we are going to do in it. Okay, open the book now. So class, now when you will open your EVS book
On page number 85, as I told you, you will find the topic. See, this is page number 85. You will find the topic hairdresser. Now, can you see this lady? What is she doing here? Yes, she is trimming the hair. ये देखो इन आंटी के क्या कर रही हैं? She is trimming the hair. So this is a hairdresser, one who is wearing a white coat. She is a hairdresser. And as I told you, where we can find these hairdresser? At a saloon. So this is a saloon where you will find a hairdresser. Now see class, hairdresser कोई मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी. That means अंकल भी होते हैं और आंटी भी होती हैं. अब आप बार्बर शॉप पे जाओगे पापा के साथ, यू विल फाइंड ऑल द हेयर ड्रेसर, या फिर जो अंकल हेयर ट्रिम कर रहे हैं पापा के, जो पापा को ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, हु इज डूइंग दैट, अ मैन. और जब मम्मा के साथ कभी आप जाओगे, यू विल फाइंड अ वुमेन देयर. वहाँ पे आंटी होती हैं, दीदी होती हैं, इजंट इट? सो हेयर ड्रेसर कैन बी अ मेल ऑल्सो, इट कैन बी अ फीमेल ऑल्सो. So now let's start with the work. First thing is write today's date. That is 22nd January 2021. So mention the date and please write classwork. ठीक है? Now I have told you that this is a hairdresser who helped in getting the hair of this lady dressed up by trimming them. Clear? And it's a saloon, where the place where we find these hairdressers. Understood? Okay. Now next, circle the things your hairdresser uses. अब हमें क्या करना है? हमें उन चीज़ों को, उन थिंग्स को सर्कल करना है. सर्कल, see it's written here circle, जो हमारे हेयर ड्रेसर यूज करते हैं. The one which is used by a hairdresser. Okay. So what are the things we have here? There is a pair of scissors, a color brush, then some beautiful pins, or you can say clips, which we use. Then we have a hair dryer or a hair blower. Then we have, what is this? Hair color. See, this is the color, and we apply this using this brush. Then we have a shampoo. We have a comb. We have a whistle here. We have an axe. Now what you have to do? You have to circle only those things which a hairdresser use. ठीक है? So tell me, is a pair of scissors used by a hairdresser? She needs it or not? Yes, a hairdresser needs it. For what? To cut the hair. जब हमें hair को cut कराने होते हैं, so she need this. कट तो वो इसी से करेंगी ना. So yes, we are going to circle it like this. Done. Now next we have is a pair of beautiful clips. So do you think we apply such things in our hair? Yes, they are hair accessories. ये accessories होती हैं when we go for any hair styling or something. We apply, we use, not apply, sorry, we use such pins. So again, a hairdresser needs it or not? Yes, she needs it. So we'll circle it. Now next we have is a color brush. कभी आपने इस ब्रश से कलर किया है अपनी नोटबुक में? कभी भी मैम ने आपको कलरिंग वर्क दिया हो, या आपने कभी देखा हो दीदी को, भैया को कलर करते हुए इन देयर नोटबुक? नो. व्हाई? बिकॉज इट्स अ कलर ब्रश यूज्ड टू कलर हेयर. यस, ये स्पेशल ब्रश होता है जो सिर्फ हेयर को कलर करने में यूज होता है. इससे हम पेंटिंग्स नहीं बना सकते बिकॉज इट इज स्पेशली यूज फॉर हेयर. तो अब क्या होगा? अ थिंग यूज बाय अ हेयर ड्रेसर और नॉट? यस इट इज. So we'll circle this like this. Done? Okay. Now next we have is this. What is it? A hair dryer. जब हम कभी शैम्पू कराते हैं अपने हेयर, या कभी आंटी हमें एक अच्छा सा हेयर कट देती हैं,
So what she used a hair dryer to set. हमारे जो हेयर होते हैं उनको सेट करने के लिए वो हेयर ड्रायर या यू कैन से इट अ ब्लोअर शी यूज इट. तो yes, it is again used by a hairdresser. So we'll circle it. Now next we have is an axe. What is it? An axe. So who uses it? Axe से क्या करते हैं? We chop wood. हम wood को कट करते हैं ना छोटे छोटे पीसेस में. तो क्या ये आंटी के यूज का है? हेयर ड्रेसर के यूज का है ये? Is it of any use to her? No, because उनके कटिंग वर्क में क्या यूज आती है? Scissor. So it is not used by any hairdresser. We are not going to circle it. Okay. Next we have is hair color. Yes. अब बताइए who use it? Of course it is used by a hairdresser. अब hair color कराने तो हम उन्हीं के पास जाते हैं ना. So we'll get this circled like this. Now next we have is a whistle. Where is the whistle? Here it is. So who used this whistle? Yes, it is used by a policeman or a guard, but not by a hairdresser. वो क्या करेंगे इसको? Whistle कर करके वो क्या करेंगे? They don't have any use of this whistle, so they don't keep it. Next we have is a comb. As I have shown you, this is a comb. So is it of any use to a hairdresser? Yes, the most important tool. वो हेयर को ड्रेस जब वो हेयर सेट तो तभी करेंगे ना when they have this, isn't it? So yes, comb is useful to a hairdresser. Lastly, we have a bottle of shampoo. Yes, what is this? A bottle of shampoo. So who use it? Shampoo किस लिए use करते हैं हम? To clean our hair, to wash our hair. तो अब जब ये हेयर से रिलेटेड है तो ये हेयर ड्रेसर के पास होना चाहिए या नहीं? उनके यूज का है? इज इट ऑफ एनी यूज टू हर? यस इट इज. सो वी आर गोइंग टू सर्कल इट बिकॉज इट इज यूजफुल टू अ हेयर ड्रेसर. क्लियर? सो व्हाट हैव वी लर्न क्लास? वी हैव लर्नड अबाउट अ हेयर ड्रेसर एंड वेयर शी सिट, what they do and what are the things they use to help us in getting our hair look healthy and smart. Okay? So class, you have understood how a hairdresser works. They are the one who give style to our hair. They are the one who can treat our hair for a better healthy hair. Then they are also the one who make us look smart, isn't it? अब आप वैसे बहुत smart हो, but hair क्या है, बहुत शाबी से रखे हुए हैं, तो वो smartness क्या होती है, नहीं चली जाती है. So when we have a nice beautiful haircut, we and girls, as I shown you in the book also, girls they apply small clips. They look so beautiful, isn't it? We have beautiful hairband. So all these things are available at a saloon too with a hairdresser. And what अब आपने देखा whenever we have some parties at home, we try to look so smart. So where we go, we take a help from these hairdresser to help us look more smart. You all are very smart looking, but they give a add-on to our smartness. Okay? So bye for now. Complete your work. Share it with me and please get ready for the next class. Take care.